The rules of replacement are statements. What kind of statements they are? जितने हमने compound statements पढ़े हैं, negation, conjunction, disjunction, implication, equivalence. So among all these compound statements, what kind of statements are these rules of replacements? आप लिखिए जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. This is from book only. आप कुछ लेके आओ तो मैं उसको लूँ, नहीं तो फिर मैं randomly ऐसे बुक से कोई क्वेश्चन लेता हूँ. So you have to derive C equivalence G, and everyone knows that what C equivalence G is basically C implies G and G implies C. This is rough work. So if you can get C implies G and also get G implies C, then you can put them in conjunction and derive C equivalence G. Now to target first C implies G, and you know that SCP produces the implication. So whatever you assume, your assumption line will imply the last line of your derivation. So you begin with the assumption C and derive G by using 1, 2, 3 along with C. So you can get C implies G. शुरू करिए आप सारे लोग. First you will target C implies G, then G implies C. So you can begin with the assumption C. Then what you can do immediately, the first line, so you have added D in C. क्यों D जोड़ा? Because you see it here, C base D, and if you get C base D, you will get E implies F. So line 6, क्या लिखना है? Implies F. कैसे मिला? 1 and 5 mod exponents. Now what are you going to do with E implies F? You can assume n number of times. There is no restriction on assumption. So in order to get G from here, you can have assumption E. That will be helpful. So within assumption, you can have another assumption. This is within this assumption. So you assume E. You don't need to write anything. The moment you draw arrow, that is good enough to indicate that this is your assumed line. You have assumed this. Now you have assumed E so that you can derive F. So from 6 and 7, E and F दोनों आ गया. Now you can have E conjunction F, 7, 8 conjunction, and you got E dot F. So you can now have E implies E dot F. E implies E dot F. From 7 to 9 by using SCP. And now you have to close this assumption, right? Because you have discharged E implies EF. So you have to close this assumption. This assumption is closed here. So you have closed this assumption. And now you got E implies E dot F. That is free from assumption. These elements are not available now for further derivation, but this is after the assumption, right? So you got this line. Now you got this part. Look at the second proposition. E implies E dot F. Now it is rather easy for you to get G. कैसे मिला G? 2 and 10 mod exponents. Now you got C implies G. In fact, C implies G. कैसे? You have assumed here. So you need to discharge this assumption at this stage. C implies G मिल गया. कैसे मिला? From 4 line to 11. SCP use कर ली. You got C implies G. Now you need to have G implies C. So again, you start with assumption G, and to show that this is assumption, you have to make an arrow against this line, and therefore you need not write anything here against this. So you begin with G. Now, the moment you begin with G, look at line number 3. You have G implies the whole. This is the implication of G. So you started with G. Now you can have this whole here. कैसे आया ये? This is from 3 and 13 mod exponents. Now, whatever you have done here in between, same thing you can do here to get this part. What you can do, this is negation H, wedge, double negation H. So what you can assume so that you can finally get this, you can assume H, because whatever you assume, that is going to imply the last line. And once you have implication, you can apply implication rule. So negation H, this will generate negation H wedge, whatever is here, right? So you have assumed H, and now you can
apply double negation here in 15, double negation, and here you can just close it. H implies double negation H. You are closing it here, and thereby you are deriving H implies negation H from 15 to 16. You have used SCP. Now you can apply that rule, negation H, which double negation H. What is this? We have applied in line 17 rule of implication. So you got this part, ये वाला part मिल गया. Now from this you can get C dot H from 14 and 18 modus ponens. Remember, this line is free. This is not coming under this assumption, so that is not an issue. And you are continuing with this assumption, and it is all falling within. So in between you can use a number of times. But if you have closed, so इसके बीच में जो भी आएगा उसको आप बाहर नहीं यूज कर सकते. The moment you discharge the assumption, you cannot use any element which falls in the line from 15 to 16, or ये जैसे आपने whatever you write here from 14 to 18, that means these lines are not available to you now. Instead, this line is available. Line 12 is available, but from 4 to 11 not available for further derivation. तो ये पैकेट बना दिया आपने, उस पैकेट से आप फिर नहीं निकाल सकते. And you know कौन से एलिमेंट्स हैं जो पैक किए गए हैं. 4 to 11 पैक किया गया है, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना. तो 14 और 18 को यूज करके आपने C dot H निकाल लिया, और from here you got C, from 19 you got simplification, and now you were looking for G implies C. इसी को तो देख रहे थे, और ये G is here and last line is 20, so you are going to close the assumption here. The assumption which is started here, you are going to discharge it here. Okay, and what are you going to write against this line? You started from line 13 and continued up to 20. So G implies C is the result of all the things happening between 13 and 20. So look at this line 21 and look at the line 12. They are free from the assumption. वो assumption के बाहर हैं दोनों line. So you can apply conjunction. Line 12 and line 21 conjunction. Then finally you will write C equivalence G. Which rule you have applied? In line 20 you have applied the rule of equivalence. So this way you derive the conclusion. So SCP empowers you to assume anything to get the desired goal. Now our goal is to show that this particular equivalence statement is a tautology. So we will have the same method. Now what does it mean to show that this is a tautology? You will be showing, जैसे अभी C implies G, conjunction G implies C आपने show किया, टेक्निक वही होगा. You will be showing negation P dot Q implication ये, तो पहले ये शो करना पड़ेगा, और फिर कंजंक्शन पहले पार्ट का इम्प्लीकेशन दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट का इम्प्लीकेशन पहला पार्ट. ठीक है? तो यू हैव टू शो दैट दिस इज द केस. जब कहा गया कि ये बताओ कैसे है, तो इसका मतलब ये हुआ. आपने इक्विवेलेंस रूल पढ़े हैं, P implies Q, Q implies and conjunction. So if you can get this somehow, then you can try the other part, and this way you get both the parts independently, then you can put them in conjunction जैसे अभी किया ऊपर. So our first target is to get one part first. Now in order to get this part, you know that this is the conditional statement, so we can begin with the assumption this and somehow derive this and then close the assumption and get this part. The same thing we can do from here. We can begin with this assumption and then derive somehow this part. Now in doing all these things, the only concern is that you are not allowed to use the same rule. That means this is the rule of De Morgan. So at no stage you are allowed to use the rule of De Morgan. Other rules you can use. Why? Suppose you want to prove the Newton's law, any of the Newton's law. So whatever law you are going to prove or derive, you are not allowed to use the same law. That would be begging the question what is called.
तो पूरे डेरिवेशन में किसी भी स्टेज में आपको डी मॉर्गन रूल नहीं यूज करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, इसको ध्यान में रखना। जो पहला पार्ट है उसी का असम्पशन आपको लेके शुरू करना है। ये आपका असम्पशन लाइन हो गया। यहाँ से आपको कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंच, यू हैव टू डिराइव नेगेशन पी वेज नेगेशन क्यू, दैट इज योर टारगेट। नेगेशन पी वेज नेगेशन क्यू यू आर लुकिंग फॉर। मान लीजिए आपको पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू मिल जाए तो आपको नेगेशन पी वेज क्यू मिल सकता है। ये आपने सोचा, मान लो। अब जैसे असम्पशन तो आप कितना भी कर सकते हो, तो अगर आप पी असम्पशन कर लो और उससे कैसे कैसे निगेशन क्यू डिराइव कर लो तो काम बन सकता है। और ये आपका असम्पशन है ही है, इसको तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, सिर्फ डी मॉर्गन नहीं यूज कर सकते। तो अब तुरंत आपको मिला कि चलो पी भी अस्यूम कर लेते हैं, तो आपने पी अस्यूम कर लिया। अब दिस इज अनदर असम्पशन, यू आर अस्यूमिंग अनदर पार्ट। अब आप देखिए पी अस्यूम कर लिया, तो अगर आप क्यू भी अस्यूम कर लो तो P डॉट क्यू कर सकते हो, और दैट वुड बी ए कंट्राडिक्शन। नेगेशन P डॉट क्यू है ही है, और अगर आपने मान लो Q भी अस्यूम कर लिया, दैट वुड बी योर थर्ड असम्पशन, यू आर गोइंग टू क्रिएट ए कंट्राडिक्शन P डॉट क्यू। 2 और 3 का कंजंक्शन आपने कर दिया। तो अगर नेगेशन Q लाना है फाइनली हमको, तो अगर हम Q असम्पशन लेते हैं तो वो इम्प्लीकेशन समथिंग होगा। तो नेगेशन Q वेज कुछ ऐसा आ सकता है, Q इम्प्लाइज समथिंग होगा तो नेगेशन Q वेज समथिंग बनेगा, और देन वी कैन हैव नेगेशन Q। तो अल्टीमेटली वी आर टारगेटिंग क्या, कि अगर Q इम्प्लाइज नेगेशन Q कहीं निकाल लेते हैं तो नेगेशन Q वेज नेगेशन Q हो जाएगा, और टोटोलॉजी लगा देंगे तो नेगेशन Q मिल जाएगा। Q भी अस्यूम कर लेते हैं। अब टारगेट क्या है, नेगेशन Q लाना। तो Q अस्यूम किया, P अस्यूम किया, और फिर दोनों का कंजंक्शन कर दिया P डॉट क्यू। अब P डॉट क्यू और नेगेशन ऑफ P डॉट क्यू, ये तो कंट्राडिक्शन बन गया। कंट्राडिक्शन बन गया तो अब हम तो कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। कुछ भी डिराइव करने का मतलब हम तो नेगेशन Q चाह रहे थे, तो नेगेशन Q ही डिराइव करेंगे। कुछ भी का मतलब तो जो चाह रहे हैं वही डिराइव करना है। ये पॉजिटिव पार्ट है, इसी में आपने जो आपको जरूरत है वो जोड़ दीजिए। एडिशन, एडिशन तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यू हैव अप्लाइड एडिशन इन 4, और इसका निगेशन तो लाइन 1 है ही है, तो आपका निगेशन Q आ गया। कैसे आया, जो लाइन 5 है और लाइन 1 जो है उसमें आपने क्या लगाया, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। अब आपने ये जो रफ वर्क इधर किया हुआ है, इसमें यही था कि निगेशन Q मिल जाए, जो काम बन जाए। तो Q है, Q इम्प्लाइज नेगेशन Q, काम बन गया। Q इम्प्लाइज नेगेशन Q, फ्रॉम Q यू गॉट नेगेशन Q। कैसे कैसे, ये आप देख रहे हो। नाउ जो आपने टारगेट किया था वो पूरा कर लीजिए। ये क्या है, 7 में इम्प्लीकेशन लगा दिया, और फिर आपको नेगेशन Q मिल गया। 8 में टोटोलॉजी लगा दिया, नेगेशन P मिल गया। तो अब हमने जो ये टारगेट किया था वो देख लीजिए, नेगेशन Q मिल गया, इसका मतलब इसका काम हो गया जो ये वाला असम्पशन किया था। तो इस असम्पशन को भी क्लोज कर देते हैं, यहाँ से खींचे लाइन, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम 2nd to 9 SCP, you need to close this assumption here। P implies Q मिल गया। अब आप टारगेट कर रहे थे ना ये वाला, आप इसको टारगेट कर रहे थे, तो आपको P implies नेगेशन Q मिल गया, तो ये आपको मिल गया। अब आप इसको लगा दीजिए इम्प्लीकेशन, नेगेशन P वेज नेगेशन Q and 10 implication, and you were looking for this implies this, right? And you started with negation P dot Q. Now you got negation P with negation Q. So you can close the first assumption also. Now this assumption is also खत्म, और ये आपका है from 1 and continued up to 11 SCP, ठीक है। So this way you have derived the first part. इसी तरह आपको इधर से you start with this and somehow reach negation P dot Q. So you try now. So you are going to continue, right? You are going to continue. You are going to begin with this. So सारे लोग कोशिश करो और फिर सोचो क्या क्या assumption कैसे लेना है। Negation P with negation Q से you have to reach to negation of P dot Q. That is your target. And this is your assumption. You are beginning with a fresh assumption, right? मैं क्यों देता हूँ आप देखो, we are looking for negation of P dot Q, and we know that we can have a tautology of the same thing, negation P dot Q, tautology हो सकता है।
और टोटोलॉजी के लिए यू रिक्वायर, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट फॉर रफ वर्क, सपोज यू आर लुकिंग फॉर, इफ वी स्टार्ट विथ p dot q, suppose if we assume the whole thing and somehow derive negation p dot q, then we can finally reach to this target. And you know that assumption can be made of anything, whatever. We get p dot q as assumption, then we can derive p from here, q from here. Enough scope is there, right? And you know, negation p and negation q are here. So if we have p, certainly that will create a contradiction, that is going to create a contradiction. And the moment we create a contradiction, we can derive anything. So from here, if we assume p dot q, then we can see that yes, that would be contradiction. In fact, we are starting with the assumption p dot q, which is contradictory to negation p dot. तो जब assumption p dot q ले लिया जो negation p dot q का opposite है, तो contradiction तो होना ही है. Now only matter of fact is that we need to derive a contradiction. That's all. Contradiction तो create कर दिया. Now it is very easy to get whatever we want. p dot q ले लिया तो contradiction तो हो गया. p निकाल लिया from 14 simplification. p निकाल लिया तो डबल नेगेशन p, डबल नेगेशन लगा दिया इसमें 15 में. डबल नेगेशन p आ गया तो यहाँ जो नेगेशन p बेच नेगेशन q है, इससे आपका नेगेशन q आ जाएगा. यू आर गेटिंग नेगेशन q फ्रॉम लाइन 13 एंड लाइन 16 बाय यूजिंग डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. नेगेशन p q आ गया. लाइन 14 में आप अपोजिट करके क्यों निकाल सकते हो. लाइन 14 को आपने कम्यूटेशन लगा दिया और कम्यूटेशन लगा के सिंप्लीफिकेशन लगा दिया. क्यू आ गया और निगेशन क्यू आ गया. अब तो आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो. तो कुछ भी तो डिराइव करना नहीं है, जो हमें काम है वही डिराइव करेंगे. तो हमें किस चीज का काम है, हमें इसका काम है, निगेशन p डॉट क्यू का काम है, तो वही ऐड करेंगे. 18 में एडिशन और ऐड कर दिया तो इसी का डेरिवेशन हो गया. नेक्स्ट लाइन p डॉट क्यू. 19 और 17 में हमने डिसजंक्टिव सिलोजिज्म लगा दिया. तो ये क्लोज किया है फ्रॉम 14 टू 20. 21 में इम्प्लीकेशन लगा दिया. 23 में सीधे इसका टोटोलॉजी हो गया ना. 22 टोटोलॉजी है. 22 टोटोलॉजी हो गया तो इसको हमें निकालना था, बस आ गया. इसको यहाँ क्लोज कर देंगे. तो ये आ गया ना. p डॉट क्यू इम्प्लाइज जो लास्ट लाइन है, कहाँ से कहाँ तक है ये लाइन नंबर, फ्रॉम 13 टू 23 SCP. अब ये जो लाइन 12 है, लाइन 12 और 24 का कंजंक्शन आपको कर देना है. दैट इज बेसिकली जो आपका रूल था. दिस इज 25 इक्विवेलेंस. सो दिस वे यू हैव derived the statement by using all these.